Alkanes is all about alkyl halide, है ना? That was we were doing in haloalkanes. And in haloarenes, when benzene ring and plus your a halogen group attached to it, so that comes in haloarenes. Means all the substitution and everything goes around on this benzene. इसी के कार्बन्स पे होगा, बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा. मतलब it behave like a complete compound, है ना? C6H6. This is benzene. So if we talk about the preparation of haloarenes, so we'll start with aryl halide. Aryl halide, like when your halogens attached with your benzene ring, this way. So these are the example of aryl halides. Okay. क्या होगा? The main thing is the formation of aryl halide. हमें सबसे पहले बनाना आना चाहिए कि हम aryl halide बनाएंगे कैसे, क्योंकि naturally they don't exist. Naturally benzene will be like a single complete molecule, है ना? Sometimes we used to write benzene like this also. So that is why the most important thing is the substitution of halide in the benzene ring. So how we can form aryl halide? So first we can form aryl halide from hydrocarbons. There are so many methods, but up to 12th, there are some small, means like limited methods which we can apply to find out or to just obtain aryl halides. Okay, so it will be like from hydrocarbons, and hydrocarbon is like where we have hydrogen and carbon. So in benzene C6H6, the formula of benzene is this. So the basic thing which we need here is the basic hydrocarbon is benzene here. Okay, so what happened? What we have to do to form a aryl halide? We have to do halogenation. Halogenation means, yes, halogenation means adding of halogenation or substituting halogen to the benzene ring. All right. So to prepare means your aryl halide from the benzene ring, we need to do halogenation. We need to substitute the halogen into the benzene ring. तभी तो वो बनेगा, है ना? भाई इकलौता अगर this is individual, if this is individual, so individually this is known as what? Benzene ring. But if you want to make it aryl halide, है ना? अगर हम इसमें halogen substitute करना है, तो we need to add one halogen, either chlorine, either bromine, either fluorine. It can be any halogen, either iodine. Okay, so to do so, we need to go through the process which is known as halogenation. Halogenation is adding of halogen into the benzene ring. Clear? Okay. And halogenation by specifically a electrophilic substitution reaction. Why we use electrophile in electrophilic substitution? We'll just go through electrophilic substitution first. Why? Because electrophile is a electron loving, electron lover. So it will attract towards the electron. अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमारे पास एक हेलोजन है Cl2, so we know this thing that both chlorine are negative, both are non-metals. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, है ना? For electrophilic substitution, we need a electron lover, means a positive, means a element with positive charge. तो क्या होगा? जब हमारे दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो हेलोजन कंबाइन होते हैं, तो अगेंस्ट देयर बिहेवियर one will donate its electron and one will accept. So out of these two chlorine, one will become positive charge and another will become negative. So this positive will go and attack on the benzene ring to form a aryl halide. Clear? Okay.
This is the main question. बच्चे इसको लेके बहुत confused होते हैं. That's why I want to make this thing clear to you. If just we take example of Br2. Okay. So what happened? In this, one Br is with positive sign, one is behave as electrophile, and another one become nucleophile. Same with iodine. One will become electrophile and another will become nucleophile. Clear? So this positive will attack on the benzene ring and form aryl halides. Clear? That's what we do in the halogenation process to form the aryl halide from hydrocarbon. Clear? Okay. Let me just explain you this thing with the help of a proper equation. I'll just explain you the concept only right now. I will explain you this concept with the help of a proper reaction. So for example, if I have benzene here, this is benzene ring, completely stable, the 3 double bonds and 6 carbons. Okay. Now we have Cl2. Beta, note this thing down. This is very important. FeCl2. We used to take Lewis acids to perform this reaction. And your Lewis acid can be FeCl2. It can be FeBr2. It can be AlCl3. Note down the examples that which Lewis acid you can take in this reaction, because whenever they give you the objective question ना, तो उसमें आपको काफी सारे एग्जांपल्स देंगे and they will not give you the common one. वहां पे लिविस एसिड कॉमन नहीं लिया जाएगा. वहां कौन सा लेंगे, वो सबसे डिफरेंट लेंगे जो जनरली रिएक्शंस में देखने को ही नहीं मिलता. दैट इज व्हाई मैं आपको यहाँ पे लिविस एसिड के एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे यूज हो सकते हैं फॉर हेलोजिनेशन. तो फर्स्ट इज FeCl2, AlCl3, FeCl3. This is the common one. This FeCl3 is the common one. Generally they used to give you FeCl3. जहां भी देखोगे यही मिलेगा as Lewis acid. But a part of this, other can also use. AlCl3 is also common. Okay. ZnCl2. This is also a good Lewis acid. ZnBr2, BF3, and FeBr3. But one important thing, note this thing down. Whenever you will see this AlCl3 written anywhere in the reaction, that must be anhydrous. It must be anhydrous. अगर ये anhydrous नहीं होगा तो ये reaction आगे perform नहीं होगी. So only this is the exception with AlCl3. So whenever they perform a halogenation with AlCl3, your AlCl3 must be anhydrous. Clear? Note this thing down. Okay. So these are the Lewis acid which you can see in the reaction whenever they give you. So what happened in this reaction actually? The reaction will goes like this, that your chlorine will get attached to the benzene ring and HCl will get, you will get as a biproduct. This is a direct reaction. But for this you have to understand कि भाई what is the mechanism here, किस तरीके से कैसे वहाँ पे होता है. So let me just explain you. For example, this is your benzene ring और यहाँ मेरे पास है Cl2. So right now, just now I have told you one out of this Cl2 is electrophile, another one is nucleophile. So what happened? This electron lover will go and attack on a carbon. यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन. We have hydrogens है ना? तो क्या होगा? If we have hydrogens है, तो ये जब क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल will get out of this benzene ring. Clear? And one this electrophile and one this nucleophile, sorry, opposite बताया, this is electrophile, this is nucleophile, they combine and form HCl, and in place of hydrogen, chlorine get attached with the benzene ring. Clear? This is not just a simple process. Resonance will be there. यहाँ पे क्या होगा? Resonance भी होगा. एक बार वापस से recall कर लेते हैं, because resonance you have studied in 11th only, है ना? So let's just recall.
कि भाई रेजोनेंस क्या होता है और वहां पे किस तरीके से बॉन्ड अंदर रोटेट करता है. So let's just start. What happened? First, for example, this is our benzene ring. Okay. So to get out of this reaction, this hydrogen revert back its electron to this carbon. और जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये bond with this bond will get dissociate and come here. ठीक है. तो simply just what happened कि भाई जब हमारा यहाँ पर ये Cl जुड़ेगा तो यहाँ पे bond electrons का shifting होगा. भाई Cl पॉजिटिव ले रहे हैं हम यहाँ पर. This will come here. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी. सेकेंड पोजीशन विल बी लाइक दिस. ठीक है. अब नहीं, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दिस. आई जस्ट पुट इट रॉन्ग हियर. दिस मींस द पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर. ओके. इन नेक्स्ट, here we have our attached species. In next step, what happened? This means this electron will move to this and your bond will shift to the next carbon and this will become positive. Now the positive charge will come over here and this will become like this. In next step क्या होगा? जो positive यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? अगले में positive यहाँ आ जाएगा and your bond will be like this with the substituent species. अभी हम जब example लेंगे तब बताएंगे कि किस तरीके से कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है. ठीक है. रिमेंबर. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई हमारा एलिमेंट आया सीधे. नो नीड टू डू द रेजोनेंस. आपसे रेजोनेंस नहीं पूछेंगे बट मैंने इसको इसलिए बताया आपको पता हो कि भाई चार्ज कहाँ कहाँ मूव करता है. कहाँ मूव करेगा? इट विल मूव ऑन ऑर्थो एंड पैरा. इलेक्ट्रोफाइल्स को हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं. अभी वी विल गो टू व्हेन वी गो टू द एग्जांपल्स ना वी अंडरस्टैंड दिस थिंग. आप देखो यहाँ पे भी दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा एंड दिस इज ऑर्थो. ये तीन जगह पर ही बोल रहे हैं. अगर आपसे बोले कि भाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए कि ये कंपाउंड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए तो वो कैसे बनेगा? This will be slightly positive, this will be slightly positive, this will be slightly positive, and bond will be like this. For example, this is your attached species. So this will be your intermediate or you can say hybrid state. Okay. So let's just understand this with more examples. So for example, sometimes they use so as to make you confused. They just take, for example, FeBr2. ठीक है. अब यहाँ पर क्या था? ऊपर FeCl3 था तो आपको पता था क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं. बट इफ दे चेंज द मींस हेलोजन इन दी और इफ दे चेंज द लिविस एसिड और दे विल टेक डिफरेंट लिविस एसिड. आपके सब्स्टिट्यूएंट से अलग लिविस एसिड ले रहे हैं. तो अब ये बताओ यहाँ ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा कि क्लोरीन? द सब्स्टिट्यूशन विल बी ऑफ क्लोरीन ओनली. बेटा याद रखना यहाँ पर कुछ भी हो, whatever you are taking in Lewis acid, as Lewis acid में आप कुछ भी ले रहे हैं, ये सिर्फ रिएक्शन को करने में हेल्प करेगा. दिस विल बिहेव एज अ रिएजेंट बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सब्स्टिट्यूशन. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सिर्फ उन्हीं का ही होगा जो हमारे मेन रिएक्टेंट्स. क्लियर? ओके. अब let's just take one more example of anhydrous AlCl3, which is important actually. So for example, I have this this benzene plus Br2, है ना? Substitution I want to do this. So anhydrous AlCl3. See, this reaction will perform only with this condition. अगर anhydrous नहीं है तो reaction होगा ही नहीं. Clear? So the answer will be Br plus HBr. Clear? One will be attack on this benzene as electrophile. Clear? And another one will get attached with this chlorine. Sorry, this hydrogen which they get eliminated from the benzene ring and form HBr. Okay. But sometimes to create confusion, they just twist your question. How? Right now we were taking just simple benzene. हमने सिर्फ simple benzene लिया. Now I will take one another compound of benzene. What is this? Beta, what is this? What is this entire compound known as?
You can speak. This is toluene. Methyl group plus benzene ring, they combinedly form toluene. So when your toluene reacts with chlorine in presence of FeCl3, so what will be the product? It will create a confusion. क्योंकि हम यहाँ पर सीधा ऊपर हाइड्रोजन निकाल रहे थे, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा था, हेलोजन सब्स्टिट्यूट करने से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा था, बट नाउ यहाँ पे टॉलुइन है, so with which carbon this chlorine will get attached? 11th class में we have studied about ortho and para directing groups, even about meta directing also. कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं, दे डायरेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट के उन्हें कहाँ जाकर अटैच करना है, कहाँ जाके अटैच होना है, ठीक है. सो लेट मी जस्ट गिव यू वन सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. डिटेल में तो यू कैन गो थ्रू योर 11th क्लास बुक. So let me just give you some examples. So for example, CH3 is orthopara directing, OCH3 is orthopara directing, OH, C2H5, NH2. They are electron sender. Note this thing down. They are known as electrosender. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप. और भी बहुत सारे बेटा, when you go through in detail ना, you will came to know. So these are known as activating group. Why? Because they transfer their electron, they send their electron to the benzene ring and make it activate. Clear? Let's just talk about meta directing group. Because this is very important. जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ जाके अटैक होगा, कहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. So meta directing group are okay, C bond H CHO और NH2 311O CH3 ester. And if we talk about this group, this is nitro group and cyanide. So these are known as meta directing, और इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्टर्स. They extract the electron with which they are attaching. जब बेंजीन के साथ ये कनेक्ट होंगे तो they extract the electron, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटर्स. ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटर्स. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? वहां पे डीएक्टिवेशन को करते हैं. Note this thing down. This is very important. Whenever you go for elimination, you must know these things. So what happens when your toluene react with the CH3Cl? So हमारे पास बेटा दो ऑप्शन आएंगे. Because since we know this methyl group is a ortho and para directing, तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो डायरेक्टिंग और दूसरा बनेगा पैरा डायरेक्टिंग. So one will be like CH3Cl and another will be like CH3Cl. Clear? अब मेजर क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, that which will be your major product? इनमें से कौन सा माइनर होगा, कौन सा मेजर होगा? Remember this thing. बेंजीन का we know this thing that this is ortho, this is meta, this is para. This is ortho, this is meta, and this is para. These are the positions around the benzene ring. Clear? Among all the products, the para directing product, or you can say where the substitution is takes place at para, will be your major product, and other than orthos will be your minor product. Clear? Note this thing down, because when we'll go for the electrophilic substitution in detail,
then you have to understand this thing. Okay, so I have just explained you about the substitution, that how substitution takes place. So let's just start with the nucleophilic substitution reaction and properties. Okay, so what actually happened when your halogen get attacked on, means get attached with the benzene ring? So let's just go for resonance again. So for example, if I have halogen with the lone pair of electrons, so what happened? What led to the shifting of cone? किस तरीके से आपकी वहां पर cone shifting होंगी? ठीक है, so let's start. What happened? This halogen will donate its lone pair electron to here, यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड है, दिस विल ब्रेक एंड ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर. क्लियर? अब क्या होगा? योर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू हियर. क्लियर? The structure will be like this. Clearly note this thing down because this will just create a difference. आपका वहाँ पे कोई difference ला सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि भाई after substitution क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्टिंग में कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले कहाँ गया हमारा? On ortho. Again next will be on para directing. ठीक है? So what happened? Your this lone pair will move to this carbon, and again this pi bond break and shift to this. The next will be the lone pair will shift to the para position, and your structure will be like this. Clear? Or you just can write positive here. Clear? After that, in next step, your pi electrons, means your lone pair electrons will shift to this one, and this pi bond will shift to this carbon. Means electron from this pi bond will shift to this one, and what you will get? You will get next structure will be like this, and lone pair of electron are at this position right now, and since we have X with a positive sign attached here. Clear? So what happened? Again this bond, this pi electron will shift to this one, और जैसे ये यहाँ आएंगे, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन से लौटा, so your final product will be like just opposite to the first one. This is your first step, this is your second step, this is your third, this is your fourth, and this is your fifth step. Clear? That is how your resonance takes place. इस तरीके से आपका अंदर रेजोनेंस होता है. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एक्सट्रैक्टिंग ग्रुप वहां पे अटैच होगा, तभी आपका रेजोनेंस होगा. बिकॉज whenever an element extract electron from the benzene or donates the electron, that will disturbs the entire symmetry. जो भी आपका symmetrical arrangement है उसके अंदर, उसको डिस्टर्ब कर देगी. उसको स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस होता है. दैट विल डिसाइड कि भाई आपका सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है या सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, या फिर हमारा अरेंजमेंट जो होगा कार्बन और बॉन्ड्स का, वो किस तरीके से होगा. क्लियर? लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन by OH group. This is very important. The first thing in your book. So what happened when we have this aryl halide Cl with benzene in presence of NaOH. NaOH is the best source of OH. So this reaction will take place at 623 Kelvin and 300 atm pressure. Note this thing down. These conditions are necessary. So what happened? So बच्चे क्या बोलेंगे? मैम, what happened? This directly will convert into this one, है ना? Substitution will take place. This will convert into phenol. ये डायरेक्ट फिनॉल में चेंज हो जाएगा. क्लोरोबेंजीन. I am doing nomenclature also. So your chlorobenzene will directly convert into phenol. But sometimes they can ask you about the intermediate product. ये डायरेक्टली कभी नहीं बनता बेटा. नोट दिस थिंग डाउन. इसीलिए मैं इसको आपको स्पेशली बता रही हूँ. सो व्हेन द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, हमेशा एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है. वो इंटरमीडिएट स्टेट आपके फाइनल और इनिशियल से बिल्कुल अलग होती है. तो यहाँ पर आपकी जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी वो क्या होगी? आपकी ONA. This will be your intermediate state. After that, acidification takes place.
with dilute HCl. Acidification will take place with dilute HCl, then you will get your phenol. This process is known as, book में इसका name mention नहीं है, NCERT में note it down, Dow's process. This is known as Dow's process, DOW''S. This is the industrial process of manufacture of phenol. Note this thing down. They can ask you this thing in 1 mark. पहला chlorobenzene to phenol जाएगा, that process is known as Dow's process. First question. Second question, they can ask you about the intermediate product. के intermediate में as substituent कौन होगा, that will be ONA. And third thing, which method is the worldwide use industrial process for manufacture of phenol, that will be your Dow's process. Clear? See you at 1 o'clock, beta.